Okay. So probability कर रहे थे, probability of combined events, and उसमें let's talk about more questions, थोड़े से tougher ones. So it says a bag contained 5 red marbles, 4 blue marbles, and 7 green marbles. ठीक है. The marbles are identical except for their color. ठीक है. Marble is chosen at random. What is the probability that it is a blue marble? So क्या आ जाएगा? 4/16, which would be written as 1/4. How many more blue marbles must be added to the bag? Now this is interesting. How many more blue marbles must be added to the bag such that the probability of choosing a blue marble is 1/3? So let's suppose how more blue marbles are X, right? Right now the blue marbles are 4. So after X is being added, there will be total of X plus 4 blue marbles. लेकिन probability निकालेंगे ना, divide by total marbles कितने हो जाएंगे? X plus 16. That's equals to 1/3, right? So 3x plus 12 equals to x plus 16. 2x is equals to 4. X is equals to 2. That means you need to add 2 more blue marbles for probability to be equals to 1/3. Okay. It says how many red or green marbles must be added? As our time. हम लोग क्या हेलीकॉप्टर में वगैरह में आ रहा है? मेरा हेलीकॉप्टर लिया हुआ है कोई? All right. So part 3 says how many red or green marbles must be added to the bag such that probability of choosing a blue marble is 1/6. So blue marble are 4, right? And देखो अब ये part 2 और part 1 से हमारा कोई लिंक नहीं है. We for us for part 3 only this information is relevant. ठीक है कि 4 blue marbles हैं. Now how many red or green marbles needs to be added so that probability of choosing a blue marble is 1/6. How many red or green? So let's suppose this is X, right? Now, how would you calculate the probability of a blue marble now with X being added? कितने blue है मेरे पास? 4. Divided by total marbles कितने हो गए? X plus 5 plus 4 plus 7, 16. Right? These are the total marbles, and this probability should be equals to 1/6. Get it? So this becomes 24 is equals to X plus 16. And X would be equals to 24 minus 16 is 8. So you need to add 8 more red or green marbles or a mix of them in order to have the probability of blue as 1/6. Again, there are X red or green marbles being added. Blue to add नहीं हो रहा. Blue 4 रहेगा. Right? Total कितना हो गया? 4 plus 5 plus 7 plus X. X plus 16. This probability should be 1/6. ठीक है? देख लो इसको अच्छे से. Done? Okay. चलो आओ देखिए. Says 2 faces of a 6-sided die are numbered from 3 to 8. 2 such dice are rolled and the resulting product multiply किया गया उनको और लिखा गया जैसे 15 times 5 times 3 is 15.
Similarly, 4 times 5 is 20 and so on and so forth. ऐसे लिखा गया है. Two of such dice are rolled and the resulting product is shown in the possibility diagram below. Copy and complete the possibility diagram. ठीक है. करते हैं. 3 times 3 is 9, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. Right? Then 4 3s are 12, 16, 20, 24, 35, and 4 8s are 32. Then 15, 20, 25, 30, 35, and 40. Right? Then 18, 24, 30, 36, 42, 8 6 are 48. Right? Then 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, and then 8 3s are 24, 32, 40, 48, 56, and 64. Get it? फिर देखो क्या कह रहा है. Using your diagram in part A, find the whether the product is odd. अब ये odd वाले कौन से? 1, 2, 3, right? 3 of these, and then 4, right? इस लाइन में और कुछ नहीं है. 5, 6, 7, right? And then 8, 9, 10. That's it, right? So 10 divided by 36 or 5 over 80. Clear? As a in count करो. 6 ऐसे है, 6 ऐसे है, तो 6 by 6 is 36. Correct? Okay. Less than or equal to 23. All right. Less than or equal to 23. ये सब हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया. That's it, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So part 2 is 12 over 36. Get it? Which is 1 over 3. Simplify करना बहुत जरूरी है. Prime, ये इंटरेस्टिंग है. कितने प्राइम नंबर्स नजर आ रहे हैं? गिनो. सोचने की जरूरत पड़ रही है. मेरी बात सुन. ये जो हमने लिखे हैं टेबल में, these are the product of two numbers, है ना? तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो उसके फैक्टर्स भी तो है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबर को लेता हूँ 24 को, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 6 and 4, तो ऑटोमेटिकली 6 और 4 इसके फैक्टर्स ही हो गए. तो ये सारे के सारे नंबर्स आर नॉट प्राइम क्योंकि इनके फैक्टर्स ये रहे ऊपर. राइट? बेवकूफ बनाया इसने. क्या होगा आंसर? 0. राइट? डिविजिबल बाय 14. हाँ, ये देखते हैं. डिविजिबल बाय 14 के लिए 14 होना चाहिए, 28 होना चाहिए. नजर आ रहा है कि 28 नजर आया, 42, 56 ये वाले तो हैं, और 56 and 9 12 15 18 21 24 32 35 blah 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 15 20 30 40 ये 42 आ गया. राइट? ये आ गया आपका 7 वाली लाइन में 3 थे. 28 नहीं है. 7 7 जा 7, ये गलत लिखा हुआ मैंने. 7 4 जा 28. ठीक है? क्लियर? पहले क्या लिखा ना 35, तो एक और भी गलत लिख दिया फिर इसका मतलब हमने. राइट? 9 हो गई. ठीक है? ऑलराइट. एंड कितने हो गए अभी?
6 हो गए. So that's 6/36 or 1/6. ठीक, clear? All right. I want you both to try this question. Try करो. Let me pause the video. So it says probability that Michael oversleeps is 0.3. If he oversleeps, probability that he takes a taxi to work is 0.8. That means this is 0.8, right? And of course, no taxi would be 0.2. If there is a probability of 0.3 that he oversleeps, and there is a probability of 0.7 that he doesn't oversleep, right? It says if he does not oversleep, probability that he takes a taxi to work is 0.2. And this is 0.8, right? Okay. We get the part two. It says using a tree diagram, calculate the probability that Michael takes taxi to work. Now, taxi to work can be in two situations: when he oversleeps and takes a taxi, or when he does not oversleep and takes a taxi. These are your two situations. तो हमने क्या बात की थी? Whenever this kind of situation comes, हम branches को multiply कराते हैं, and the within branches we multiply and the branches we add, right? So probability that oversleeps and taxi or does not oversleep and taxi. So we multiply oversleep and taxi. That is 0.3 times 0.8 plus does not oversleep and taxi is 0.7 into 0.2. Get it? So you get final answer. Point 0.8 into 0.3. 4. 0.24 plus 0.14. 0.38, right? Fine. कोई मसला? Okay. All right. Two bags X and Y contain red and black marbles only. Yeah, this is interesting. Two bags X and Y contain red and black marbles only. Bag X contains 4 red marbles and two black marbles. 4 red and 2 black. Bag Y contains 3 red and 1 black. I see. A bag is chosen by flipping a fair coin. Okay. If the coin shows a head, bag X is chosen. Otherwise, bag Y is chosen. A marble is then selected at random from the chosen bag. Draw the tree diagram to illustrate the experiment. Try करो पहले tree diagram खुद से फिर हम मिलके करते हैं. Probability की 2 videos डाली है ना मैंने on the classroom. You guys are all on the classroom now. क्या होगा? पहले you toss a coin first, and it's either a head or a tail with the probability of half and half, right above. And if you have a head, then you select the marble from bag X, जिसमें 4 red है और 2 black. So this is 4/6 and 2/6, red and black. ठीक है? If you have a tail, then again you have 2 choices. Either you have red or you have black. But you take it from bag Y, and bag Y has 3 red and 1 black. So red आने की probability 3/4 and black आने की 1/4. ये ट्री डायग्राम बन गया आपका पहला पार्ट हो गया. Get it?
with part 2. Hence or otherwise, क्या है कि probability of selecting the red marble बिल्कुल पिछले वाले की तरह है. Selecting the red marble has two possibilities. That you have a head and then you select a red marble, or you have a tail and then you select a red marble. Head and red, tail and red. ऐसे ही. So you do probability of head and red or tail and red. You were not there in the last class, that's why I'm asking you particularly. 100%. So probability of head and red marble is half into 4/6. Or means plus. Half into 3/4. Get it? 2/6 is 1/3 plus 3/8. क्या आ गया ये? 8 plus 9. 17/24. वेरीफाई कर लेना इसको. ये आ रहा है. ठीक है, easy. Copy कर लो if you're doing, then let's do the next one. And girls, okay, try this one. So grand price is 30 degrees upon 360, which is 1/12. Says wins the consolation prize on his second spin. Second spin पे भी, first spin पे भी, it's the same probability. It doesn't really matter कि पहले क्या हुआ था, right? Because it's not the skill के वो कोई skill से कर रही है. It's the same, right? It's the same chance. 60/360 or 1/6. Spins pointer 3 times and wins nothing. Would be that try again or no prize? Okay, let me read the question. In the game of Wheel of Fortune, a fair pointer is spun. The wheel is shown in the diagram below. Player can only spin the wheel once unless the pointer lands on try again, for which he gets another chance to spin the wheel. इसका मतलब ये है कि अगर उसने 3 दफा पॉइंटर चलाया है and wins again, that means there are 2 try agains and third time no prize, right? So probability of try again and then no prize means 90/360 into 90/360 into 180/360. That's 1/4 times 1/4 times 1/2 is 1/32. Second part, देखो अब इसको ऐसे समझो. You want second prize to be the consolation prize. That means the first can be, okay, no wait. इसका मतलब है कि हमने पार्ट 2 गलत किया क्योंकि मैंने लिटरेचर उसके बाद पढ़ी है इसकी. Second pay wins the consolation prize and the second spin का मतलब है the first one must be the try again. और कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा, right? So that means your part 2 will be probability of try again and then consolation prize.
So which would be 90 upon 360 into 60 upon 360. That's 1 over 4 into 1 over 6 makes it 1 over 24. Right? This was a good question. Clear? So this is like an independent event where what happens in the first try, the probability of the first try is not affecting the probability of the other try. Right? One of the questions that make this understand what we have to calculate. Okay. So basically, इसको ऐसे देखो that if there is one game, you keep multiplying. If there is a way to play the game other way around, then it will be added. For example, part 3 को अगर मैं change करूं, spin the pointer 3 times and wins either no prize or consolation prize. Now it can be two cases. Try again, consolation. Or try again, no prize. Now try again, consolation is being multiplied. वो एक पूरा game है. Then there is another way to play that game is that try again, consolation. That would be added. Yeah, that and an or concept basically. That if you want, let's suppose इसको ऐसे भी देख लो कि if there is a dice, you want 6 and 4. पहली try पे 6 and दूसरी try पे 4. So you'll do 1 over 6 times 1 over 6. But if you want 6 or 4, that means that my probability of my what I desire has increased because now I am good with two numbers. Before I was very rigid कि पहली दफा में 6 आना चाहिए, दूसरी दफा में 4 आना चाहिए. That has less probability, right? But to get 6 or a 4, probability increases, right? तो आप इस तरह भी जज कर सकते हैं कि is it getting difficult or is it getting easier? If it's getting easier, then probably an add question. If it's getting difficult, that means you're getting a multiplication question, right? Okay. चल ये वाला try करो. बहुत शुक्रिया. So Nora has 15 coins in her wallet. She has 8 20-cent coins, 4 50-cent coins, and 3 1-cent coins, $1 coins. 2 coins are taken out of her wallet at random without replacement. ठीक है, सारे मसले इनके हम ही सॉल्व करें. ठीक है. अच्छा, वो कह रहा है कंप्लीट द टी डायग्राम. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल 15 कॉइन्स है जिसमें से 4 आर 50 सेंट्स, 8 आर 20 सेंट्स. तो ये 8 over 15 हो गया. बाकी कितने रह गए? 3. परफेक्ट. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट कि अगर पहला 20 सेंट कॉइन निकल गया, अब टोटल कॉइन्स 15 से कितने हो गए? 14. और 20 सेंट कॉइन्स 8 थे, एक कम हो गया, तो कितने हो गए? 7. So this would be 7 over 14. Everyone understands this? नहीं समझ में आया. वॉलेट में 15 कॉइन्स थे जिसमें से 8 कॉइन्स थे 20 सेंट्स के. फर्स्ट कॉइन 20 सेंट निकल गया, कितने रह गए टोटल? और 20 सेंट्स वाले कितने रह गए? 7 over 14. But 50 cent coins and $1 coins are untouched. उनकी probability सेम रहेगी, but total 14 है, बस इसका ध्यान रखना. That means this would be 4 upon 14 and 3 upon 14. हाँ, तो पहला this is the first coin कि first coin 20 cent हो सकता है, 50 cent हो सकता है या $1 हो सकता है. अब पहला अगर 20 cent है तो अगला वाला फिर 20 हो सकता है, 50 हो सकता है या 1 हो सकता है. तो this is the first coin and over here is your second coin की probabilities depending on के पहला कौन सा था, right?
सो नाउ देखो अब इसने भी किया हुआ है, इफ द फर्स्ट वन इज 50 सेंट्स कॉइन, तो 15 से टोटल कितने हो गए 14, और 4 से ये कितने रह गए 3। अब इस सिनेरियो में हमारे पास $20 कॉइन्स और $1 कॉइन पे कोई फर्क नहीं आया, वो उतने ही थे जैसे जितने पहले थे, 8 एंड 3। गेट इट? सो दिस वुड बी 8/14 एंड 3/14। क्या बेटा? 4/15 है। 4 50 सेंट्स कॉइन थे, पहला तो निकाल लिया, अब वॉलेट में कितने बचे, और 50 सेंट्स वाले कितने बचे? नहीं, 50 सेंट्स वाले 4 थे, एक निकाल लिए, 4 में से एक निकला, कितना 3 बचे ना, 3/14। ऐसा क्या हो गया? कंफ्यूज है ना, वो नहीं आई थी पिछली क्लास में। सही है। सो ये देखो कि देयर आर 4 आउट ऑफ 15 50 सेंट्स कॉइन, राइट? यू टुक आउट 150 सेंट, अब टोटल कॉइन्स रह गए 14 और 50 सेंट्स रह जाएगा 3। ठीक है, 4 में से एक कम हो गया 3, 15 में से एक कम हो गया 14। ये अच्छा, अब देखो, अब जब मैं इस ब्रांच की बात कर रहा हूं ना, तो इस ब्रांच पे पहला कॉइन 50 सेंट वाला निकला है, तो मोहरा बैग में पहले ही 8 कॉइन्स थे 20 सेंट्स वाले, तो अभी भी 8 ही होंगे यार। ये ऐसे देखो कि 8 कॉइन्स थे 20 सेंट्स वाले, 4 कॉइन्स थे 50 सेंट्स वाले, और 3 कॉइन्स है $1 वाले, राइट? अब इस ब्रांच में क्या हो रहा है, इस वाले में कि एक 50 सेंट्स कम हो रहा है, तो 50 सेंट्स कितने रह गए 3, और टोटल कितने 14। तो ये तो 8/14 ही रहा। ठीक है, 20 सेंट तो कम नहीं हुआ, 20 सेंट सोच रही है, सिर्फ एक 50 सेंट वाला कम हो गया। करेक्ट? अब इसी तरह से तीसरे वाले का बताओ, सोचो अब कि $1 वाला निकाला है, तो $1 वाले कितने रह जाएंगे 2/14, बस इतनी सी बात थी। और अब $1 वाला कॉइन कम हुआ है, बाकी दो अनअफेक्टेड है, बाकी दो कितने थे, 8 $20 थे और 4 50 सेंट्स थे। बिल्कुल। और देखो ये बनाएगा 14, 8 + 4 = 12 + 2 = 14। ठीक है, तो ब्रांचेस का सम 1 होता है, 7 + 4 = 11, 11 + 3 = 14। ठीक है, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14। ये सारे 14/14 बन जाएंगे, मिला के 1 बन जाएंगी। सो दीज 3 will add up to 1, these 3 will add up to 1, these 3 will add up to 1, these 3 will add up to 1। ठीक है, अच्छा, इसका जो अगला पार्ट था वो यहाँ से मिसिंग है, वो मैं निकाल के आऊँ जरा। तो बी पार्ट कहता है इसका, find the first coin is a 20 cent coin and the second is $1 coin। दैट्स की मेकिंग इट डिफिकल्ट कि पहला मुझे ये चाहिए एंड दूसरा मुझे ये चाहिए। जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाता रहेगा उतनी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती रहेगी। ठीक है, सो पहला वाला कॉइन 20 सेंट, दूसरा वाला $1, कौन सी ब्रांच की बात कर रहा है? दिस वन, राइट? सो दैट्स प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/14। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 4 and 7 makes it 4/35। क्लियर होगी बात? ओके, two coins taken out are in different denominations। क्या मतलब? हम्म, नहीं, डिनोमिनेशन क्या होती है, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेशंस क्या होती है? कभी पैसे इस्तेमाल नहीं किए तुमको?
तो बेसिकली लेट्स सपोज मैं एक रेस्टोरेंट गया, वहां पे मैंने वेटर को पकड़ा 1,000 रुपए और मैंने उसको बोला मुझे 100 की डिनोमिनेशन में ला के देना खुले, राइट? तो वो 100 की 10 ला के दे देगा मुझे, करेक्ट? सो डिफरेंट डिनोमिनेशन मीन्स के दो कॉइन्स दोनों सेम नहीं होने चाहिए, 20 20 50 50 1 1 नहीं होने चाहिए। जवाब ही दे दिया मैंने तुम लोगों को, तो क्या होगा फिर? 20 50 21 50 20 51 120 एंड 150। लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, मैंने जवाब दे दिया तुम लोगों को, देयर इज एन इजी वे टू दिस। इतने सारे केसेस कौन निकालेगा? नहीं, ये जवाब नहीं है। इतने सारे केसेस है ना, यू अभी हमने काउंट किए, लेकिन मैंने इससे पहले तुम लोग को क्या बताया था? तीन है जो नहीं चाहिए उस, 20 20 नहीं चाहिए, 50 50 नहीं चाहिए, 1 1 नहीं चाहिए। क्या बात की थी हमने लास्ट क्लास में? कि ये तीन केसेस निकालते हैं और 1 से माइनस कर देते हैं, बिकॉज दीज थ्री इज व्हाट आई डोंट वांट। ठीक है? रादर देन कैलकुलेटिंग द अदर 6 केसेस, हम ये तीन केसेस निकालते हैं और इनको 1 से माइनस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग 6 आ जाएगी। ठीक है बा? सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे डिफरेंट डिनोमिनेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं जबरदस्ती सेम डिनोमिनेशन लेके आता हूँ, एंड प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होता है। दैट मीन्स सेम डिनोमिनेशंस प्लस डिफरेंट डिनोमिनेशन शुड ऐड अप टू 1। तो मैं 1 से सेम डिनोमिनेशन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ। ठीक है? दैट इज द मेन आइडिया। तो शॉर्टर हो जाएगा, इट वुड बी मोर एफिशिएंट। सो पार्ट 2 में हम कह रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 20 और 50 50 और 1 1, राइट? $1 $1। ठीक है? अब ये देखो, ये एक हिंट है कि ये 20 20 मल्टीप्लाई होगा, और का मतलब प्लस, देन 50 50 मल्टीप्लाई होगा और का मतलब प्लस, $1 $1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? तो आप ब्रांचेस मार्क कर लें जो आपको चाहिए। आपको 20 20 चाहिए, आपको 50 50 चाहिए, और आपको 1 1 चाहिए, राइट? सो 8/15 इंटू 7/14, सो 1 माइनस 8/15 इंटू 7/14 प्लस 50 50 क्या हो गया? 4/15 टाइम्स 3/14, 4/15 टाइम्स 3/14 प्लस 1 1 हो गया 3/15 टाइम्स 2/14। ठीक है? बात समझ में आ गई? देखो फाइनल क्या आता है। 68/105। Get it? ठीक है? ऑलराइट, फिर देखो क्या कह रहा है। Then says the second coin is a 50 cent coin. First one can be any. But the problem is कि सेकेंड ट्राई में जो 50 सेंट कॉइन की प्रोबेबिलिटी है, इट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन पहले क्या हुआ है। सो यू हैव टू राइट ऑल द केसेस, 20 50 50 50 एंड 150, ये तीन केसेस बने। बताओ कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई व्हाट एंड व्हाट? So 150 will be multiplied plus 50 50 will be multiplied plus 20 50, right? So it will be like probability of 20 50 or 50 50 or $1 and 50. Get it? Now 20 50 is this bunch, 50 50
is this, and 150 is this, right? So that's 8. This is part 3, right? 8 over 15 times 4 over 15, right? Plus 4 over 15 times 3 over 14, plus 3 over 15 times 4 over 14. क्या आ रहा है फाइनल आंसर? Oh yeah. क्या आया था फाइनल आंसर? Hmm? 4 over 15. No. 4 over 15? 14 over 15. ये आ रहा है 14 over 15. काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी लग रही है. वेरीफाई कर लो. 4 over 15. ठीक है, गुड आंसर. ऑलराइट, फिर लास्ट पार्ट इसका कहता है टोटल वैल्यू ऑफ द 2 कॉइन्स इज मोर देन $1. इसका क्या मतलब है? आओ ब्रांचेस को देखें. 20 plus 20 is not more than $1. 20 plus 50 is not more than $1. पहली ब्रांच हो जाएगी ये वाली. This is more than $1. $1.2 हो गया ना. This is not. ये भी 1 होता है, more than 1 नहीं है. This is 50 cents plus 50 cents is $1, not more than $1. और ये तो सारे के सारे ही है ना more than $1. तो इसमें हमें ये अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. It's this only. Right? अगर पहला ही कॉइन $1 आ गया, that means that the value now will be more than $1 anyways. कोई भी हो दूसरा कॉइन, it doesn't really matter. Right? So in part 4, you will do probability of 20 and 1 or 50 and 1 or $1. Right? So that's 8 over 15 times 3 over 14 plus 4 over 15 times 3 over 14, right? Plus 3 over 15 times, जरूरत ही नहीं कुछ करने की. 13 upon 35. ठीक है. So this is the most complicated a tree diagram can go. Again, मैंने past papers upload किए हैं. Probability past papers करने चाहिए तुम लोगों को. We are going to spend Monday and Wednesday on this. Friday is your sets and probability test. ठीक है. Then we will move on to the next topic. All right. See you all.